Let's see next. Half power frequencies and bandwidth. Half power frequencies, as the name implies, what do you guess? The frequency when the power is half of the maximum power, right? Half power frequencies का मतलब क्या है? The frequencies at which the frequencies at which the power in the circuit is half of the maximum power, right? Is half of the maximum power, right? And the power at resonance is called half power frequencies. How it happens? Right? Let me take this one as power axis, right? And the graph you will see like this, right? If this point is power maximum, if I'll go for half power frequencies, let this is P. This P is equal to P max by 2, correct? Then at that point, there will be two frequencies, right? This is midway, this is omega 1, and this is omega 3, right? It means in half power frequency, we can see the current in the circuit at half power frequencies is 0 point, that is IRMS is equal to I max by root 2, okay? 1 by root 2. That means 0.707, 77% of the maximum current. Okay. So you can write the current. The current in the circuit at half power frequencies is either 0.707 or 70.7% of maximum current at resonance, right? Yes, sir. Of maximum current. Maximum current means current at resonance, because only that at resonance current becomes maximum, right? Yes. And there are two half power frequencies, omega 1, Omega 1 and omega omega 3. 1 and omega 2, right? Omega 3, no? Omega 3, right? And omega 1 is less than omega 2, correct? Yes. Right. There are two half power frequencies, right? एक इंडक्टिव के लिए हो सकता है और एक कैपेसिटिव के लिए भी हो सकता है, right? Yes, sir. There are two half power frequencies. Number one, omega 1, called lower frequency, called lower half frequency, called lower half frequency, right? ये भी लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी है, बट ये कब होता है? At this frequency, circuit is capacitive, right? Yes. At that frequency, circuit is capacitive.
अंडरस्टूड? Yes, sir. सर्किट जो है इस पे कैपेसिटिव है ना? ठीक है, Yes. फिर ओमेगा 3 भी है, अपर अपर फ्रीक्वेंसी, दिस इज लोअर अपर फ्रीक्वेंसी, राइट? And there is also omega 3. We say it as upper frequencies. Upper frequencies, right? And omega 3 is greater than omega 2, correct? But इस केस पे सर्किट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव, करेक्ट? Yes. और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1, Hmm. उसको कहते हैं बैंडविड्थ, राइट? Right. Sir, so basically omega 2 is the bandwidth. टोटल बैंड मतलब एक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? Yes. ओमेगा 3 से ओमेगा 1 के बीच में जितने भी सारे फ्रीक्वेंसीज, हम तो एक वैल्यू लिए, लेफ्ट साइड में ओमेगा 3 लिए, राइट साइड में ओमेगा 1 लिए, जो भी वैल्यू वहां से वहां तक आती है उसको कहते हैं बैंडविड्थ, राइट? Okay. The difference of half power frequencies omega 3 and omega 1, right, is called bandwidth. We can write the difference of half power frequencies omega 1 and omega 2 is called bandwidth. Sir, omega 1 and omega 3, right? Yes, yes, it's called bandwidth, correct है ना? That is delta omega is equal to omega 3 minus omega 1. ठीक है, got an idea about half power frequencies and bandwidth, right? Yes. There is another term, that is quality factor of a series resonant circuit, right? Then something comes, that is quality factor. Quality factor क्या होता है? The characteristics of a series resonant circuit is determined by quality factor, right? It defines, let हम अगर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे कि वोल्टेज करंट कैसे वेरी करता है, राइट? और वो कर्व की शार्पनेस से ही पता चलता है क्वालिटी फैक्टर के बारे में, राइट? क्वालिटी Yes. फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है? Characteristics of a series resonant circuit, how the voltage and current varies, right? So you can write the Yes. characteristics of a series resonant factor circuit. The characteristics of a series resonant circuit is determined by the Q factor. ठीक है? The characteristics of series resonant circuit is determined by the quality factor, है ना? ये एक बात हुआ. दूसरा, अगर ग्राफिकली दिखा जाएगा, ठीक है, it defines the sharpness. It defines the sharpness of IV curve, right? देखते हैं. It defines the sharpness of current and voltage curve.
at resonance. When Q factor is large, the sharpness of the resonance curve is more, right? The sharpness of resonance curve is more. एंड जब कम है तो लेस है, ठीक है ना? Yes, sir. दैट मीन्स अगर ग्राफिकली शो करवाएंगे, दिस इज करंट एंड इफ दिस इज वोल्टेज, राइट? Hmm. और मैंने एक पॉइंट लिया वी नॉट, राइट? उसी प्रकार से अगर अगर कोई भी ग्राफ इस तरह हो सकता है, राइट? और थोड़ा पीक भी हो सकता है, उससे ज्यादा पीक भी हो सकता है ना? गेटिंग? Yes, sir. तो जहां पर पीक है, ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर क्यू फैक्टर क्या है? लार्ज है। क्यू फैक्टर जो है ना, ये पीक वाले ग्राफ में लार्ज है, करेक्ट? Yes. और ये वाले ग्राफ में क्यू फैक्टर लो है, Okay. और ये वाले ग्राफ में क्यू फैक्टर इज मीडियम, राइट? Yeah. नॉर्मल क्यू फैक्टर उसको कहते हैं, राइट? और एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? एक चीज यहाँ पर देखते हैं, क्यू फैक्टर का और भी एक डेफिनेशन है कि कितना एनर्जी है ये स्टोर करता है, राइट? एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है? थियोरिटिकली हम तो यहाँ पर बताए, मैथमेटिकली हम भी ये बता सकते हैं, क्यू फैक्टर आल्सो डिफाइंड एज, लेट्स सी व्हाट इज दैट, राइट? Q factor can also be defined as Q factor also defined as 2 pi times of, right? 2 pi into maximum energy stored by energy dissipation. Maximum energy stored divided by energy dissipation. है ना? एनर्जी मतलब वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क इज एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना? तो Yeah. टाइम टाइम अगर सेम हो गया तो टोटल पावर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय मीन पावर डिसिपेटेड, राइट? Yes. अगर टाइम को हम देखेंगे तो 2 पाई बाय टी होल इनटू, ऊपर में रहा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, राइट? Okay. डिवाइड बाय मीन पावर डिसिपेटेड, राइट? Yes. Mean power dissipated, that means resonant frequency by bandwidth, right? Resonant frequency, that is resonant frequency divided by bandwidth. And that can also be, various formulas are there for it, you can derive that also, VL by VR, right? Or that is also VC by VR. It may be inductive, it may be capacitance, right?
VL मीन्स IR अगर डालेंगे तो ओमेगा नॉट इंटू एल आर, और 1/ओमेगा नॉट इंटू C इंटू आर, करेक्ट। Yeah. तो अगर क्यू फैक्टर निकालेंगे तो इस तरह भी हो सकता है, दर इज 1/R इंटू रूट ओवर ऑफ L/C, करेक्ट। हाँ, Yes. अंडरस्टूड। Yeah. फिर इसी कॉन्सेप्ट में आता है LC ऑसिलेशंस, राइट। जब एक सर्किट में ओनली इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है, राइट, Hmm. उसी टाइम पे LC ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। ठीक है. लेट्स सी दैट नेक्स्ट। LC ऑसिलेशंस क्या होता है। आप असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है. क्लास विल डिस्कस ओनली अबाउट न्यूमेरिकल्स, राइट। Yeah. जस्ट गो थ्रू द असाइनमेंट की क्वेश्चन जो है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, राइट। ठीक है. LC oscillations, this is L, right? LC oscillations, LC oscillations क्या होता है कि मान के चलो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगवाया, राइट, और यहाँ पर हमने एक इंडक्टर भी लगवाया, है ना। दिस इज C, दिस इज प्लस माइनस इंडक्टर, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, राइट। पहले क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर, राइट। Hmm. एंड Q इज इक्वल टू CB डालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q² by 2C, Yes. correct, initially. This is energy stored in capacitor, right? ENERGY, energy stored in capacitor, correct। जब पूरा एनर्जी कैपेसिटर के पास है तभी इंडक्टर के पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, नो एनर्जी स्टोर्ड, राइट। Hmm. क्योंकि इनिशियल केस में कैपेसिटर के पास सारा एनर्जी है, and that is Q² by 2C, right? Then Yes. energy stored in inductor, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है, that is UB is equal to 0 इनिशियल केस पे, राइट। ये पहला वाला केस हुआ, करेक्ट। ठीक है. अभी स्लोली स्लोली क्या है कि कैपेसिटर तो सारा एनर्जी नहीं रखेगा, वो थोड़ा सा एनर्जी क्या करेगा, नाउ कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज, और ये जब डिस्चार्ज होगा तो किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर के थ्रू। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर के थ्रू करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। तो जब करंट जाएगा इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू चार्ज डिक्रीज करेगा, और अभी करंट जाने के कारण से इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगा, राइट। Yes. समझ पाया। हाँ. ये पहला केस होता है, बट उसके बाद जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट, देन क्या होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटर्स begins to discharge, When it is connected to. hmm, capacitor begins to discharge, right। Okay. किसके थ्रू, थ्रू इंडक्टर। Through inductor. तो डिस्चार्ज मतलब क्या है, चार्ज फ्लो करना, राइट। Yes. तो चार्ज फ्लो मतलब करंट है, Hmm. तो उसी कारण में कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो डिक्रीज करता है, राइट। Yes. और अभी इंडक्टर का क्या हो गया, एनर्जी हाफ L² है ना, हाँ. अंडरस्टूड।
तो ये एनर्जी yes, पूरा जब तक के लिए कैपेसिटर पूरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ है तब तक के लिए ये होता रहेगा पूरा करंट फ्लो करने तक, राइट? हाँ, है ना? हाँ, So this energy is transferred from capacitor to inductor, ओके, ठीक है नहीं? हाँ, और जब पूरा चार्ज इंडक्टर पे ट्रांसफर हो जाता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी था अभी वो पूरा मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। यस, हम्म, है कि नहीं? ये जो यस पूरा सर, लेने के बाद जो एनर्जी आता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, राइट? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, करेक्ट? यस, है कि नहीं? यस, और उसी टाइम पे मैक्सिमम करंट जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया होगा और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है उसी टाइम में इंडक्टर के थ्रू, राइट? हाँ, और अभी जो पूरा एनर्जी इंडक्टर के पास रहने के बाद क्या करेगा, फिर इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज हो गया मतलब पूरा एनर्जी स्टोर कर दिया तो मतलब इट कैन स्टे लाइक दैट, राइट? यस, इट विल अगेन स्टार्ट गिविंग द एनर्जी टू द कैपेसिटर। और ओके, कैपेसिटर जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था उसी डायरेक्शन में तो डिस्चार्ज नहीं होगा, नहीं, है कि नहीं? सो उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह से ये चार्ज होने के बाद नाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, ओके, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, एनर्जी, नाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, राइट? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, अंडरस्टूड ना? यस, और ऐसा नहीं कि मन के हिसाब से ये चलता है, इट कंटिन्यूज, राइट, एट ए डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, चार्ज होना डिस्चार्ज होना, चार्ज होना डिस्चार्ज होना, एक ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में चलता है, राइट? यस सर नो? यस, सो यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ energy transfer, right? The process of energy transfer continues at a definite frequency, right? Continues at a definite frequency, ठीक है? अंडरस्टूड? यस, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में वो कन्वर्ट हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, राइट? फिर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में, अंडरस्टूड? या, और अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट इन द एलसी सर्किट, राइट? तो ये कैसे वेरी करेगा टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मतलब यहाँ पर भी एनर्जी होता है प्लस क्यू मैक्सिमम चार्ज, राइट? ये पॉइंट और ये पॉइंट मान के चलो माइनस क्यू नॉट, राइट? अगर हम देखेंगे तो ये चार्जिंग डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है ना वो एंडलेसली से चलता रहता है, राइट? यस, अंडरस्टूड? या, इट गोज ऑन लाइक इट। बट इन रियल प्रैक्टिस इंडक्टर तो एक वायर से बना है ना, हाँ, अगर वायर से बना है तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? नहीं, हाँ, रहेगा, होगा। तो मतलब इन एक्चुअल इन रियल प्रैक्टिस, राइट, in actual LC circuit has some resistance, right? LC circuit has some resistance, correct?
यस। सो जिसके कारण क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, रेजिस्टेंस है तो, है कि नहीं? हम्म। सो इसके कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू व्हिच एनर्जी इज डिसिपेटेड, राइट? यस। Energy is dissipated in the form of heat, right? या। है ना? हम्म। सो दैट मीन्स जो चार्जिंग डिस्चार्ज हो रहा था वो अभी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। एक्चुअली एंडलेसली इस तरह नहीं चलता रहता है। मान के चलो ये हमने ले लिए प्लस क्यू नॉट, ये हमने ले लिए माइनस क्यू नॉट, राइट? हम्म। एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ ऐसे बढ़ जाता है, फिर आहिस्ता 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 कहते हैं कम हो जाता है, राइट? ठीक है। विथ टाइम, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर पीक को जोड़ देंगे तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट लुक्स लाइक दिस, राइट? ठीक है। मान के चलो कैपेसिटर के ऊपर में क्यू चार्ज है, राइट? क्यू चार्ज भी ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, हाँ। एंड डी आई बाई डी टी इज द, मतलब मान के चलो लेट क्यू बी चार्ज ऑन कैपेसिटर, राइट? यस। क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर, करेक्ट? एट हम्म। एनी टाइम टी, and di by dt with the rate of change of current, and di by dt be the rate of change of current, right? Be the rate of change of current, है ना? यस। So q by t, q by c minus q is equal to cv ना, तो v हम्म। is equal to q by c. ओके। So q by c into कैपेसिटर, इंडक्टर के केस में क्या है, एल डी आई बाई डी टी, यस। दिस शुड बी टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, राइट? हाँ। बट यू नो करंट जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है माइनस डी क्यू बाई डी टी में, राइट? सो यू कैन राइट q by c, राइट? माइनस एल की जगह पे एल था, आई की जगह में डी क्यू बाई डी टी डालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे ना, यस। दैट इज इक्वल टू जीरो। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस एल अगर कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, राइट? सो वन ठीक है। बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो और नॉट, इट इज। समझ में आ रहा है ना? हाँ। हमने एक पढ़े थे एस एच एम में, राइट? याद करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, राइट? यस। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, करेक्ट है ना? हम्म। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे देखो क्या है, वन बाई एल सी है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई रूट ओवर ऑफ एल सी, करेक्ट? हम्म। एंड यू नो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ इज इक्वल टू वन बाई रूट ओवर ऑफ एल सी, यस। कि नहीं? सो फाइनली यू गॉट द सेम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टू पाई रूट ओवर ऑफ एल सी, करेक्ट यस। है ना? हाँ। So therefore the charge oscillates with the frequency and varies sinusoidally with time, right? हाँ। Yes or no? यस। और हम यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं एनर्जी ऑसिलेशंस को, किसके साथ, एसएचएम के साथ। हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना? एक ये एसएचएम का इक्वेशन था हमारा, राइट? है कि नहीं? हाँ सर।
तो एलसी ऑसिलेशंस में ओमेगा नॉट जो है क्या हो गया 1/LC, राइट? मैकेनिकल ऑसिलेशंस में क्या होता है K/M, याद है स्प्रिंग कांस्टेंट? या एलसी में ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC, करेक्ट? दिस इज यस एलसी ऑसिलेशन. एलसी ऑसिलेशन, राइट? बट मैकेनिकल ऑसिलेशंस में क्या होता है √K/M, राइट? दिस इज मैकेनिकल ऑसिलेशन, राइट? ठीक है. K is spring constant. समझ पे आ रहा है ना? यस एलसी ऑसिलेशंस पे you see something here. कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? 1/C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? V/Q है ना? मतलब 1/C इज V/Q. हाँ तो थोड़ा सा चार्ज Q मतलब छोटा थोड़ा सा चार्ज कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है टू स्टोर ए यूनिट चार्ज, राइट? यस सर पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, राइट? या पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं टू स्टोर ए यूनिट चार्ज, राइट? यस Potential difference required to store a unit charge, right? या तो उसी टाइम पे मैकेनिकल ऑसिलेशंस क्या होगा? K इज इक्वल टू F/X, राइट? है ना? F इज इक्वल टू KX है ना? तो वहीं से निकाल कांस्टेंट ठीक है. F/X, राइट? है कि नहीं? यस सर और यहाँ पर जो M था वहां पर क्या L/C है? हाँ अगर कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? यस अगर हम कंपेयर करेंगे दैट इज मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अगर कंपेयर करेंगे, राइट? है ना? वहां पर जो मास था यहाँ पर क्या होगा? इंडक्टर होगा ना? M/, क्या था यहाँ पर? क्या होगा? मास इज यहाँ पर इंडक्टेंस, राइट? M एंड दिस इज L, करेक्ट? वहां पर फोर्स कांस्टेंट K था, यहाँ पर क्या था 1/C, राइट? वहां पर डिस्प्लेसमेंट था X, यहाँ पर हो जाएगा चार्ज Q, ठीक है. राइट? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? dx/dt था. यहाँ पर क्या होगा? I का होगा dq/dt, राइट? यस और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होता था, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, राइट? यस यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कंपैरिजन है, एनालॉजी, राइट? ठीक है. And next class we'll see about transformer, right? We'll do some numericals also. ठीक है? फाइन सर. This was for today. Then we'll see the NCERT questions and examples and the assignment that I gave, right? Then we'll wind up ओके. this chapter and we'll go to electromagnetic waves. ठीक? यस सर. This was for today.